solution के लिए correct है guys? Yes or no? Please tell me. Yes or no? Yes, अरे sir. भाई, electrolytic conductance will be for a particular solution. और solution के लिए we have to define what is the conductivity multiplied by volume. यही था formula. Yes or no? Please tell me guys. Formula यही था. अरे Yes, sir. बोलो, सही था ना? This is kappa into V. What happened, guys? I'm not getting yes or no sir from anyone else. Mariam Parker, Amna, please don't write anything. Keep your mic on, all of you guys. Keep your mic on. Can all of you see that formula? G is equal to kappa into the volume of solution. Yes or no? Amna, Yes, Sidra, keep your mic on. Yes, sir. Yes, okay. Now tell me, if I am, keep your mic on, guys, keep your mic on. Thank you very much. If I'm talking about a solution, then that solution is defined by its molarity, right? And what is molarity? Number of moles of solute divided by molarity is equal to volume. Yes, very good, volume. So if the concentration is increasing, then molarity क्या हो रहा है बताइए? अगर concentration हम बढ़ा रहे हैं, see here guys, see here. If we are increasing the concentration, तो molarity बढ़ रही है या घट रही है? मोलारिटी बढ़ रही है या घट रही है? बोलो भाई. कंसंट्रेशन इंक्रीज करना का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन? मोलारिटी बढ़ रही है या घट रही है? मोलारिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? जोर से बोलें. इंक्रीज, राइट? कंसंट्रेशन इज मोलारिटी ओनली, राइट? मोलारिटी को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना? नाउ यू कैन सी दैट आई कैन इंक्रीज मोलारिटी बाय आइदर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स और बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम. आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रही है कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द मोलारिटी. आपको ये साफ साफ पता चला होगा दैट वॉल्यूम इज व्हाट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी. इफ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी एंड जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी. क्या ये चीज आप लोग को दिखी? Yes, sir. So I can say conductance is inversely proportional to molarity. Conductance is inversely proportional to molarity. जैसे जैसे हम है ना, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, कंडक्टेंस क्या करेगी? What will happen to the conductance? Conductance will decrease. यार ये तो आप लोग मतलब पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, कोशिश करने के बावजूद ये जवाब नहीं है. Conductance decreases on increase in concentration, or we can say conductance increases on dilution. Right, next point. The amount of ions in 1 centimeter volume as the number of ions in 1 centimeter cube increases, the conductivity also increases. You can say conductivity decreases on dilution.
Raise your hand once you're done. Keep your hand raised, and if you're done, please keep your hand raised. Don't. Waiting for Amna, Parker, Aisha. You can just take a screenshot. Parker, Rabah, and Rabia. We have written just this note, Aisha, till now. Please take a screenshot. Others, please write and raise your hand once you're done. Waiting for Rabah. Rabah, please write it down quickly. Okay. You can lower your hand, guys. Now you will write factors affecting molar conductance. Factors affecting molar conductance. Number 1, आपके पास है the nature of electrolyte. Nature of electrolyte. You'll write the lambda m of strong electrolyte is higher than the lambda m of weak electrolyte. Write the second point. Size of ion. Smaller the size of ion, greater will be ionic mobility and higher lambda m. Lambda m is the molar conductance. Please write this with me, okay? Please write this with me. Next, third is temperature. Third is temperature. Right? The interionic interaction. The interionic interaction decreases with increase in temperature. With increase in temperature, leading to greater ionic mobility. Greater ionic mobility. And if the ionic mobility is higher, and increase in lambda m. So lambda m will also be higher. Now, last, the fourth point is concentration.
Sir, Yeah, tell me. sir, please read the point of temperature. What are you saying, Marim Parker? Sorry. Can you please read the temperature? Read this. Okay. The interionic interaction decreases with increase in temperature. This is temperature, leading to greater ionic mobility and increase in lambda m. Right, in concentration. As we know the formula of lambda m, it is equal to kappa into 1000 divided by capital M, that is molar conductance. So we can here see that lambda m, this k is a constant, 1000 is a constant. So lambda m, the molar conductance or molar conductivity, it is inversely proportional to molarity, meaning the lambda m, it is inversely proportional to concentration. Now, concentration and dilution, these are completely opposite word. That is why you can say, therefore, lambda m is directly proportional to dilution. So molar conductivity, it increases with dilution. Okay. Now they can ask you why it increases. So उसके लिए आप एक यहाँ पर reason लिख लीजिएगा. Please write. When the solution is diluted, when the solution is diluted, when the solution is diluted, the lambda m of electrolyte increases because with dilution dissociation of electrolyte also increases. Now, all of you guys, please see. As we know, as we have seen right now, the lambda m, it is directly proportional to dilution. So if I am going to increase the dilution, the lambda m will also increase. The reason why it is increasing is because as we add more and more water, if I am going to add more and more solvent, especially water, generally we take water as a solvent. If I add more and more amount of solvent, then the dilution, with dilution, the dissociation of electrolyte also increases. तो जितने electrolyte है, generally वो और ज़्यादा dissociate करने लगते हैं. For example, जब भी आपके पास, even if you have a strong electrolyte, it is almost completely dissociated, but not always. It is not 100% dissociated हमेशा. That is why जितना पानी डालते जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, डिसोसिएशन होता जाएगा. And with more dissociation, we will get more number of ions. And when we have more number of ions, that will increase the molar conductance. But there will be a point after which what will happen, if you are going to increase the dilution, we are increasing so much so that there will be a point we will get a lambda m or dilution करने के लिए lambda m is not going to increase. So that point, it is known as the point of infinite dilution, and that molar conductance, it is known as limiting molar conductance. कि एक limit होगा molar conductance का कि उसके बाद अगर आप और पानी डालें, if you are going to even dilute it further more, then also the lambda m will not increase. That is known as infinite dilution. इस process को कहते हैं, and the lambda m at infinite dilution is known as limiting molar conductance or limiting lambda m. So please write infinite dilution as the topic. Infinite dilution.
right here. Infinite dilution का मतलब क्या होता है? It means that the solution is so dilute that lambda m attains a maximum value. Attains a maximum value. ठीक है, it will attain a maximum value. और मैक्सिमम इज द लिमिट, उससे ऊपर नहीं जा सकते, सीधे से बोल सकते हैं इसको लिमिटिंग वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू. Limiting value. And it does not increase. It does not increase on further dilution. You write next point. The lambda m at infinite dilution is aka also known as limiting molar conductance, known as limiting molar conductance and denoted by, एक चीज हम बस ये बोल रहे हैं ना, like in my tongue molar conductance is always there, ठीक है, but the correct term according to NCERT is molar conductivity. But even if you write molar conductance, no one is going to say that no, it is wrong, molar conductance कुछ नहीं होता है. But हाँ, if you see in NCERT and you see that okay, molar conductivity is given, just understand that it is same as molar conductance what is present in your notes, ठीक है. और वो मेरे जबान में molar conductance है because from a very long time I have been speaking as molar conductance, ठीक है. In your NCERT, they have written molar conductivity according to NCERT, and denoted by. There are few ways by which you can denote it. Okay, you can either denote it as lambda 0 m. This 0 इसका मतलब होता है that we have zero concentration, or you can denote it as lambda infinity m. Infinity का मतलब that we are having infinite dilution, or if you are using the capital lambda, this is the capital uppercase lambda, m naught or lambda m infinity. ये सारी चीजें सेम चीज दर्शाती हैं, बस हाँ यहाँ पे जीरो का मतलब होता है जीरो कंसंट्रेशन है, इन्फिनिटी का मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन है. बोथ ऑफ देम दे मीन द सेम थिंग. राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. Aisha, Rabba and Rabia, please raise your hand once you're done. Rabba, you're still writing. Rabba, जल्दी लिखें please. Rabba, are you there? Rabba, I don't know. Chill, ठीक है guys. Whether she is here or not. Now right next, effect of dilution. On lambda m of weak and strong electrolyte.
weak and strong electrolyte. Okay. First of all, we will see for strong electrolyte. So first of all, strong electrolyte are strong electrolyte मतलब यही होता है that they are almost completely dissociated, है ना? So we write strong electrolyte are almost 100% dissociated. Almost बोल रहे हैं ना? Almost 100% मत लीजिए. Almost completely dissociated. Almost completely dissociated. Therefore, on dilution, the increase in lambda m is slow. बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता लैम्डा m, it is slow and linear. ठीक है, and linear. जितना पानी डालते जाए उतनी linearly it is going to increase. Linearly it is going to increase. तो अब आपके पास एक प्लॉट आता है और it is increasing. It's very simple plot. So people saw that what is the relationship between lambda m of a particular electrolyte and concentration. So concentration के साथ सीधा ग्राफ नहीं बन रहा था. So they took root of concentration and it was a kind of okay graph. Now in this graph, this is your graph actually. ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पे लिखने की जरूरत अभी आपको नहीं. Try to understand this. This is very important if you are going to understand because ये graph कभी-कभी once you are done with this chapter when you revise कर रहे होंगे ना तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा पंगा कर सकता है ये वाला ग्राफ. ठीक है, इस वजह से ध्यान से देखिए. This is a specific graph जिसमें you are not going to go in this direction. Left to right आपको नहीं जाना है, आपको उल्टा जाना है, right to left. ठीक है, you have to go right to left. Why sir? Because we are talking about dilution. When we are talking about dilution, then what will happen? Concentration will decrease, right? पानी डालने से क्या होगा? Concentration decrease करेगी. And when the concentration is going to decrease, तो हम लोग को इधर जाना पड़ेगा, right? Concentration is going to decrease. समझ में आ रही बात? Right, next point. And when you just plot this, it will be lambda not m. Right here. लैम्डा कोई फायदा नहीं, आप लोग सवाल करो तो आप लोग जवाब नहीं देते. लैम्डा नॉट एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड. यस सर, नो सर भी नहीं बोलना है किसी को. डिटरमाइंड बाय दिस प्लॉट बाय एक्सट्रापोलेटिंग raise your hand once you're done.
Waiting for Aisha, Rabia तो पता नहीं है. Rabia, Aisha and Rabia. Okay. Second is weak electrolyte. Since weak electrolyte, We is weak electrolyte. Since weak electrolyte is partially dissociated, the lambda m increases. The lambda m increases sharply and exponentially on dilution. Therefore, the graph between lambda m and root c is exponential, is not linear. It is not linear. Okay, so we will get this type of graph. The lambda m is very low, and as we are going to dilute it and decrease the concentration, the lambda m is going to increase very exponentially, because the ions that are present in the electrolyte that are present in a weak electrolyte, those are not completely dissociated, they're partially dissociated. So as we increase the dilution, as we add in more and more solvent, then more and more electrolyte are going to get, then more and more electrolyte are going to get dissociated, and that will increase the lambda m. Right, next, it is evident that lambda m or lambda m of weak electrolyte cannot be determined by this graph. All right, next, let me know if you have not done. So since we cannot determine the lambda naught m of weak electrolyte, Colross did a few experiments and he gave the Colross law of independent migration or law of independent migration. So same thing. Right, next. Law of independent migration. Okay. Or this is also known as or law of independent migration. Law of independent migration.
So the law states that now this law has been asked many a times in the examination directly. So it is better that if you memorize this particular statement, please write the lambda m, or rather lambda naught m of weak electrolyte and the molar conductance of an electrolyte at infinite dilution. This is the same thing, right? Lambda naught m, limiting molar conductance or molar conductance at infinite dilution. The lambda naught m of weak electrolyte is equal to the sum of lambda naught m of its constituting ions. ठीक है, बहुत ही सिंपल सही है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. हाउएवर यू कैन एक्सपैंड दिस, what you can do is lambda naught m, तो आप क्या लिख सकते हैं, the molar conductance of an electrolyte at infinite dilution. इस चीज को पूरा आप एक लाइन लिख सकते हैं, राइट? मोलर कंडक्टेंस, व्हाट इज लैम्डा नॉट एम? इट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन. ठीक है, so you can expand this, but this statement is also valid. Now what does this mean? It means that if I have lambda naught m of a particular electrolyte, it will be equal to the lambda naught of the cations as well as the lambda naught of the anions, positive and negative. So for example, if I have lambda naught of NaCl, this will be equal to lambda naught of Na positive and plus the lambda naught of Cl negative. Similarly, if I have, let us suppose, lambda naught of MgCl2, this will be equal to the lambda naught of Mg2 positive plus, see here we are having two chlorine, so there will be two chlorine ions, so 2 into the lambda naught of Cl negative. ठीक है, चलिए, I'm going to give you some questions. Please try to figure out what will be the lambda naught. Lambda naught of KCl, lambda naught of AlCl3, lambda naught of NH4OH. NH4OH, it dissociates into NH4 positive and OH negative. Similarly, lambda naught of CH3 COOH, acetic acid. So CH3 COO negative and H positive. Lambda naught of AgCl. If you have not written this lambda naught M thing, please write this down and let me know. You will send the answers on my WhatsApp, okay? Send the answers on my WhatsApp. You guys have 5 minutes. I think 5 minutes will be more than enough for you guys. Also, if you guys have any doubt, please let me know.
Sidra, NH4OH it dissociate into NH4 positive and OH negative. ठीक है, so you have no NH4OH and CH3COH you have to read it. ठीक है, I understand there will be some problems in that. Okay. I will let you know how to do it. Amna correct, very good, Amna. Sir? Yeah, tell me. Sir, can you please explain this again? So it says that Paulus law says that, for example, if I have NaCl, which is an electrolyte, and the lambda naught m, or the limiting molar conductance of NaCl, will be equal to the limiting molar conductance of its constituting ions. Na plus है ion में और Cl negative, right? So NaCl is made up of two ions, Na positive and Cl negative. तो बहुत basically Paulus law ये कहता है that if you want to find out the molar conductivity of NaCl, just take the sum of molar conductivity of Na plus and molar conductivity of Cl negative. ठीक है? Now, in this you have to be careful in things such as MgCl2. If you see MgCl2, then I have to see that MgCl2 dissociate into Mg2 positive and two chlorine negatives. That means MgCl2 का जो molar conductance होगा, the lambda naught m of MgCl2 will be equal to the sum of the molar conductance of Mg2 plus and twice the molar conductance of Cl negative, because here we are not having one Cl negative, rather we are having what? We are having Cl negative as well as one more Cl negative, right? That is why we are going to write lambda naught of Mg2 plus 2 into the lambda naught of Cl negative. You got it, Mariam? You got it, Mariam? I have repeatedly said. अच्छा रबा, हाँ जी, बोले मरियम. So can you hear me? ये वेरी बहुत बहुत लाइट आवाज है आपकी, बहुत धीमी आवाज आ रही है, बट हाँ, लेकिन आप कम से कम माइक ऑन करके बोला करें. जनरली आप लोग जब बोलते हैं तो आप लोग माइक तुरंत ऑफ कर देते हो, उससे आवाज आती नहीं है. ठीक है? या बट आई कैन हियर यू. अंडरस्टूड दिस ना? Yes, sir. ओके, ठीक है. हाँ रबा, आप देख लीजिएगा एक बार क्या आंसर है. 5 मिनट्स. अच्छा पारकर, इफ यू वांट टू राइट, आप एक बार लिख लीजिए जल्दी से. कितना लिख लीजिए आप कम से कम. राइट टिल हियर. So for KCl, it will be lambda naught of K positive plus the lambda naught of Cl negative. Will lambda naught of Al3 positive plus the lambda naught of 3 into lambda naught of Cl negative. Here it will be lambda naught of NH4 positive plus it will be the lambda naught of OH negative. So जो ions में dissociate कर रहा है वही लिखना है आप लोगों को. In this case, it will be lambda naught of CH3COO negative plus the lambda naught of H positive. Here it will be lambda naught of Ag positive plus the lambda naught of Cl negative. Those who have not done, please write it down. Raise your hand. सिद्रा आप करेक्ट कर लीजिए. Yes, sir. सिर्फ आमना और सिद्रा ने भेजा था, नो वन एल्स सेंड इट. रबा आपका कितना सही है? सही है आपका?
Parthiv, you're done? Because बाकी लोगों का हो गया. Okay. So from here we can write, guys, you can lower your hands. From here we can write that lambda naught m of a particular electrolyte will be equal to the number of cations, ठीक है ना? When after dissociation, the number of cations you are getting into the lambda naught, the molar conductivity of that cation, plus the number of anions that we are having, n negative मतलब number of anions, 3 Cl है, 2 Cl है, क्या है, multiplied by the molar conductance of those anions. What is n positive and n negative? N positive is the number of cations after dissociation. N negative is the number of anion after dissociation. Right, next, applications. In application, number 1 is to determine the lambda naught m of weak electrolyte. You will directly get questions from here, so please pay attention. You have been given lambda naught of CH3COONA, okay, which is equal to X Siemens centimeter square mole inverse. Then you have been given the lambda naught of NaCl, which is equal to, let us suppose, Y Siemens centimeter square mole inverse. You have been given the lambda naught of HCl, which is equal to Z into Siemens centimeter square mole inverse. They're asking find lambda naught m of CH3COOH. ठीक है? Now there are various way of doing this. बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको लेके चलते हैं, ठीक है? बहुत ही स्टार्टिंग से आप लोगों को हम लेके चलते हैं. If you want to write, बहुत लोगों को मन करता था लिखने का, तो लिखिए अभी, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है. लेकिन write this down quickly, whatever the question is there. I'll wait for a while, then I will start. Write the question if you have not written. ठीक है, I think few people are done, तो बाकी लोग का भी हो गया होगा. ठीक है, please let me know if you are not done. Please let me know if you are not done. Please let me know if you're not done. ठीक है, everyone is done. Fine. ठीक. So here you will see what is given to you. You have CH3COONA, NaCl, and HCl. The only prerequisite knowledge that you should have is how CH3COONA is going to dissociate, how NaCl is going to dissociate, and how HCl is going to dissociate. Also, how CH3COOH is going to dissociate. Raise your hand if you have difficulty in telling how particular electrolyte is going to dissociate. इन तीनों में से, इन चारों में से अगर किसी में भी डाउट है किसी को कि कैसे डिसोसिएट करेंगे, then please raise your hand. If you have a doubt, how, if any one of them, किसी एक में भी अगर आपको डाउट है ना, for having a doubt in any one of them, please raise your hand. I'm giving you 10 seconds. एक बार दिमाग में आप एक बार रिपीट कर लीजिए. ओके, दिस CH3CONA ऐसे डिसोसिएट होगा, NaCl ऐसे डिसोसिएट होगा, HCl ऐसे डिसोसिएट होगा, CH3COH ऐसे डिसोसिएट होगा. ठीक है. पार्कर को डिफिकल्टी, पार्कर किसमें डिफिकल्टी है? CH3COONA.
अच्छा ठीक है। Na का कोई और कंपाउंड CH3CONA है ना, तो देखिए दो तरीके से इसको डील कर सकते हैं आप, ठीक है। हम तो आपको ऐसे रटाना नहीं चाहेंगे ना, इसका तो ये होता बता के हम निकल सकते हैं कैसे डिसोसिएट होगा, बट द थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू टेल हाउ इट इज गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड। अगर आपके पास कोई नया मॉलिक्यूल आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना, इज देयर एनी फ्रैगमेंट जिसका हमको पता है, आयनिक फ्रैगमेंट आपको कोई दिख रहा है जो आयनिक मॉलिक्यूल प्रीडोमिनेंटली बनाता है। कैन यू सी एनी आयनिक, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो आयनिक प्रीडोमिनेंटली बनाता है? कोई फ्रैगमेंट है CH3CONA में which makes predominantly ionic molecules? Yes, Parker. Oh, अच्छा एक बात बताइए, आप थोड़ा सा और हम एक चीज करते, थोड़ा सा देखने का तरीका है बस, ठीक है ना। आपको किस से यहाँ पे CH3 से डिफिकल्टी है, COA से डिफिकल्टी है, या फिर मतलब कौन सा फ्रैगमेंट रहता तो बता सकते हैं, जैसे NaCl है। सो कैन यू टेल मी NaCl में क्या क्या डिसोसिएट करेगा? टेल मी हाउ इट विल डिसोसिएट। Na प्लस एंड, and Cl minus. ठीक है, तो Na अगर रहेगा तो Na कैसे डिसोसिएट करेगा? हमेशा Na प्लस में, सही है ना। तो यहां वाला भी Na कैसे डिसोसिएट करेगा? Na प्लस में, Na plus. और बाकी बचा हुआ CH3COO नेगेटिव, है ना, बाकी CH3COO नेगेटिव। तो इस तरह से आप ना वॉट एवर फ्रैगमेंट इज कंफर्टेबल फॉर यू ना, जो आप आसानी से देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये डिसोसिएट करता है जनरली ऐसे, उस पर आप फोकस करके उसी से डिसोसिएट कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी करेक्ट, क्योंकि ये 2 साल से कम आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में उस चीज को देखी हो, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग। CH3 का डिसोसिएशन लिखना है आपको, CH3COONA. Please don't write this now. Listen here, guys. All of you guys will give you CH3COO negative and Na positive. NaCl जब डिसोसिएट करेगा तो ये देगा आपको Na positive and Cl negative. Also, the lambda m की अगर हम बात करें, lambda not m की, so this is x, this is y. और HCl जब डिसोसिएट करेगा, then it is going to dissociate into H positive and Cl negative. This is your Z. Now this is the given part, और target क्या है आपका? The target is CH3COOH. So this is my target. That is CH3COOH. ठीक है? Now dissociate this. You will get CH3COO negative plus H positive. Plus H positive. क्या दिख गया सबको? Yes or no? Please tell me. Any problem till here? No, sir. No, sir. 1, 2 and 3. अब आपको ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू द कॉलरॉस लॉ, आई वांट, दे आर आस्किंग मी द लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH, बट दिस विल बी इक्वल टू द लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। सो बेसिकली देयर, अगर हम इनके इंडिविजुअली का हम ऐड करके निकाले, तो इट इज गोइंग टू गिव मी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट is the sum of the constituent आयंस का मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, कैन यू सी CH3COO नेगेटिव इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, 2, 3 में कहीं पे आपको CH3COO नेगेटिव दिख रहा है? फर्स्ट वाले में दिख रहा है ना, फर्स्ट वाले में दिख रहा है, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। वी नीड दैट, राइट। एक्स हमको चाहिए, ठीक है, एक्स हमको चाहिए। एक्स में आपके पास CH3COO नेगेटिव भी आ गया, और क्या आ गया? Na पॉजिटिव भी आ गया। जैसा नो पीसल में गाइस, अरे बोलो, अरे बोलो, सही है। तो एक्स चाहिए लेकिन Na पॉजिटिव नहीं चाहिए, करेक्ट? Yes. किसी को कोई दिक्कत? नो, राइट। कैन यू सी H प्लस एनीवेयर? Third. थर्ड वन, तो क्या लिखेंगे? प्लस प्लस Z Z. माइनस Cl. माइनस, जोर से बोले, Cl. आवाज नहीं आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही, चैट में बताएं। Cl. Cl, हाँ, माइनस Cl नेगेटिव, या थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर हैविंग, दिस विल बी इक्वल टू, जो CH3COH अगर आपको चाहिए ना लैम्डा नॉट m CH3COH का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x प्लस Z माइनस Na प्लस Cl कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत होगा किसी को? माइनस हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया इधर, Na प्लस Cl। कैन यू सी Na प्लस Cl समवेयर?
Na+ और Cl कहाँ दिख रहा है आपको बताइए? हाँ सेकंड वाले में y आ गया कि नहीं आया बताइए? x + z - y, बात समझ में आई? डिफिकल्ट नहीं है ना, आसान है। ठीक है, बस आप स्टेप मिस करने की आप मतलब ये गलतियां ना करें कि आपने स्टेप मिस कर लिया। ठीक है, सवाल तो आई थिंक सबने लिख लिया था, ये आंसर लिख लिया, इसका सोल्यूशन एक तरह से। ठीक है, नाउ देयर आर मेनी थिंग्स, ये जरूरी नहीं है एक मार्क्स का सवाल आएगा, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा लग रहा है आपको, बट सीरियसली एक्सपेक्ट ये करता है कि ये 1 2 3 जो है ये आपके दिमाग में हो रहा हो, ठीक है ना। सो ऑल ऑफ दिस थिंग शुड बी वेरी मच, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द डिफरेंट डिसोसिएशंस। चलिए इसको प्लीज छापिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ जाएंगे। सो दिस इज द लैम्डा नॉट एम ऑफ आपको CH3COH, ठीक है, लैम्डा नॉट एम CH3COOH का x + z - y आ जाएगा। whatever be the value, I am not going towards the value आप लोग प्लग इन करके कर लेंगे, ठीक है। वो मैथ्स है, केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म है। राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। डन एवरीवन, लिख लिया क्या सबने? चलिए सिमिलरली आपके पास अगला सवाल। lambda naught of NH4Cl is given is equal to x centimeter square mole inverse। आपको दिया हुआ lambda naught of NaOH which is equal to y Siemens centimeter square mole inverse है, and lambda naught of NaCl is given as Z। ठीक है, NH4Cl, NaOH और NaCl, you have to calculate lambda naught m of NH4OH। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, सॉल्व करें। If you are getting stuck, you will ask me, okay guys?
गाइस व्हाट्स द क्वेश्चन हुआ आप लोगों से? टेल मी। अच्छा, आमना का आंसर आया है। आमना का आंसर आया है। हाँ जी, सही है। करेक्ट है आमना, वेरी गुड आमना। आमना, कैन यू प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप आल्सो? भेजा है क्या आपने? जो सिद्रा ने भेजा है। जस्ट अ सेकंड सिद्रा। वेरी गुड सिद्रा, बहुत बढ़िया। आई होप डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। जनरली ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट अगर आप लोग खोल खोल के चीजों को रखेंगे बिल्कुल अपने हिसाब से, तो इट विल बी वेरी इजी, है ना? आई मीन, the only way to get better in something is to get comfortable with it, है ना? तो उसको तोड़ तोड़ के चीजों को बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा। पार्कर, आई होप यू हैव आल्सो डन इट करेक्टली। हाँ जी, पार्कर, वेरी गुड पार्कर, करेक्ट। किसी को डाउट नहीं आया ना बीच में? आमना, पार्कर, सिद्रा, एनीवन जिन लोगों ने आंसर दिया अभी तक? यू डू नॉट हैव एनी डाउट ना? कहीं आप रुके तो नहीं? नो सर। ये सा नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। जैसे आप लोग के स्कूल में शायद हो चुका है ये, तो आप लोग को थोड़ी आसानी होगी। आयशा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आयशा, यस आयशा, what happened? Is Aisha not here? Okay, we will see. You can send the answer on the Zoom chat ना आयशा? आप Zoom chat में भेज दीजिए। XYZ के टर्म्स में तो होगा ना? ठीक है, अब now I can see there are many students not here, तो उनको explain करने के लिए I would have to write this, है ना? So obviously I have to get NH4 positive and OH negative. So this NH4 positive है आपके पास और OH negative है। NH4 positive is in. आयशा, आप भेज रहे हैं क्या आंसर? आयशा, आर यू सेंडिंग द आंसर इन द Zoom chat? या आपसे नहीं हुआ? कुछ बोलेंगे आप? डोंट हैव एनी इज नॉट द आंसर ना। 1 मिनट। यू हैव नॉट डन दी क्वेश्चन। आप सवाल नहीं कर रहे क्या? फोन नहीं है आपके पास? इतना टाइम तो दिया गया था आयशा। नहीं, खैर देखिए, अब यहाँ देखिए, it will be NH4 positive. We will get NH4 positive here, which is your X. ठीक है। Then with the X, I will also have the Cl negative extra. इसको हम minus Cl negative कर सकते हैं। I don't need the Cl negative. Then I will get the OH from NaOH, तो plus हम Y करेंगे, but the Na positive which will be along the Y will be unnecessary, so I will have to subtract the Na positive from here. Now I can rewrite this as X plus Y minus Na positive plus Cl negative. Now this will be equal to X plus Y minus Z. ठीक है आयशा, you should have done it. No, I don't know why you have not done it. चलिए, प्लीज राइट अनदर क्वेश्चन। इसको ना प्लीज आप ऐसे नहीं कीजिएगा। दिस क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिया है, लेकिन आप प्लीज अभी ये जो हम सवाल दे रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, दैट इज वाई विल नॉट डू इट दैट वे। जिस तरह से हमने यहाँ पे किया, आप इसको खोल खोल के करेंगे बिल्कुल जैसे आप कर रहे हैं, तो उससे आप गाइस डन इट, है ना? इज इक्वल टू एक्स, वो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड देन हियर वी हैव लैम्डा नॉट ऑफ BaOH होल ट्वाइस, दिस इज y, and lambda naught of BaCl2, this is equal to Z। ठीक है, you have to find, इसमें भी आपको सेम चीज फाइंड करनी है, find the lambda naught of NH4OH। चलिए, please do this guys, you'll send the answers on my WhatsApp। आयशा, आपके पास फोन नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप करेंगे नहीं। आई डोंट नो व्हाई यू नीडेड सो मच टाइम।
Rabha, we have a question on the screen. I think you were not present when I was explaining these type of questions. So just wait for a while. I will explain it when the others are done. Okay, Rabha? Okay, sir. So I only did the first question, half part. I didn't saw its end. हम समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? ये वाला किया था आपने? The first question, CH3COH. Just the half वो part तो of it I did. Yes, sir. अच्छा, copy, you want to copy it down, right? No, sir. I will take a screenshot. अच्छा, take a screenshot. Done, sir. करेक्ट पार्ट पे, ठीक है. सो इफ यू आर स्टक देयर, दैट्स गुड. आप वहां पे रुक जाइए. आपने अगर उस चीज को पकड़ लिया है, दैट्स वेरी गुड. देयर इज समथिंग अदर आई हैव टू एक्सप्लेन, है ना, वो आपने समझ लिया, ठीक है, वेरी गुड. वहां पे रुक जाए बस आप. ठीक है गाइस, प्लीज सी हियर. प्लीज सी हियर गाइस, प्लीज सी. देखिए, so as you know, I will now expand all of these things. So this will be NH4 positive plus Cl negative. Here we will get Ba2 positive and we will get 2OH negative, right? We'll get 2OH negative. And then we will be having Ba2 positive as well as 2Cl negative will be present. अब हमको चाहिए क्या यहाँ पे? I need NH4, right? This will be NH4 positive. ये हमारा target है, plus OH negative. So I will find where is my NH4 positive. So obviously it is in the X, right? So I will have X, ऐसा लिख सकते हैं, lambda naught of NH4OH will be equal to X, है ना? Whatever the X is. But I don't need the Cl part, right? So what I will do? X में से क्या minus कर देंगे? I will subtract the Cl negative. Now I need the OH. Where is the OH? OH is in the second, that is Y. But Y में आपके पास 2 OH आ रहा है. Yes or no, please tell me guys. Y में 2 OH है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? प्लस Y/2 कर देंगे, है ना? 2 OH था, 2/2 क्या हो जाएगा? 1. वी नीडेड ओनली 1 OH, राइट? यस और नो? बोले गाइस. ठीक है, अब चांस हुई. नो, Y/, क्या आ गया आपके पास? Y/2 आ गया. When we are having Y/2, तो ये OH में तो 2 हो रहा है, साथ में Ba2 plus Ab2 हो जा रहा है. That means what is extra here? Extra is Ba2 positive, half. क्या सही बात है, हाँ या ना बोले? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, -B2 प्लस. ठीक है, एंड OH नेगेटिव हमारे पास आ गया. हाँ, क्या अब हमारे पास एक्स्ट्रा हो चुका है? The extra thing that I am having here, the extra thing that I am having here is x minus y/2 तो हमारे पास है, सॉरी, x plus y/2 है हमारे पास, and I have minus of Ba2 positive by 2 and minus of Cl negative. ठीक है, माइनस ऑफ Cl नेगेटिव. और ध्यान से देखिए जरा, इसमें मैथ से थोड़ा सा आप लोग उलझे ना बस यहाँ पे. ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, Ba2 पॉजिटिव माइनस 2Cl नेगेटिव होल डिवाइड बाई 2. बोलेंगे इस, हाँ जी, कोई दिक्कत? Yes, sir. नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन होगा, माय बैड है ना, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे. हाँ, और कुछ डाउट है किसी को? पार कर रहा हूँ. Sir, why 2Cl? अच्छा, वो एलसीएम लिया ना हम लोगों ने, होल डिवाइड बाई 2 हो गया. Yes, sir. ठीक है. नाउ Ba2 plus 2Cl negative is nothing but it is equal to minus, this is Z, right? Ba2 plus 2Cl negative divided by this, Y is also divided by 2 and Z is also divided by 2. Correct? है ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन. आई होप यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स. आराम आराम से करें, बिल्कुल. चलिए,
Everyone is done. I'm stopping the screen. Just एक second दे दें हमें. Right, next to determine the next application. हमने एक application किया अभी. Second application is right. The second application. What is happening? And second application is to determine degree of dissociation of weak electrolyte. ठीक है. So degree of dissociation, it is given as alpha, which is equal to the molar conductivity of a particular electrolyte at a particular concentration divided by the molar conductivity of a particular of the electrolyte at infinite dilution. ठीक है, at infinite dilution. तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो एक्सट्रीम केस का सवाल आता है यहाँ पे ना, अल्फा इज इक्वल टू, ये छोटा सा मामला है, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा एम. क्या है सर लैम्डा सी क्या है? तो लैम्डा सी इज द lambda mc, it is nothing but it is equal to kappa into 1000 divided by molarity. ठीक है. सो व्हेन द कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, उस कंसंट्रेशन पे आपको बस क्या निकालना रहेगा, आपको निकालना रहेगा मोलर कंडक्टिविटी. दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन. तो जो एक्सट्रीम केस का सवाल रहेगा ना, बिल्कुल एक तो आसान सवाल आ जाएगा, दैट आपको मोलर कंडक्टिविटी एट अ कंसंट्रेशन वो भी दिया हुआ है और आपको इनफिनिट डाइल्यूशन पे भी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है. उसके एक लेवल आगे का सवाल ये हो सकता है कि लैम्डा एम सी ना देके उन्होंने दिया है आपको क्या, कंडक्टिविटी दे दी है और कंसंट्रेशन दे दिया है, एंड दे आर आस्किंग यू टू यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू गेट व्हाट, लैम्डा एम सी. बात समझ में आ रही है? ऐसा नो प्लीज टेल मी गाइस, है ना? yes, दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है, किस तरह से सवाल बन सकता है. और दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, और एक और दूसरे और आगे लेवल का सवाल क्या हो सकता है, वो डायरेक्टली लैम्डा एम ना देके दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द लैम्डा एम बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ, जो अभी हम लोगों ने देखा है. समझ में आई? आपको क्या दे देंगे, आपको इस तरह से दे देंगे कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, या फिर और एक्सट्रीम केस और हल्का अगर सवाल देंगे तो आपको बोलेंगे कि लैम्डा एम नॉट NH4OH का ना देखिए, वो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का दे देंगे. इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में है. बहुत सिंपल सा कि आप इनको इन दोनों का ऐड कर देना, यू जस्ट नीड टू ऐड बोथ ऑफ दिस टू गेट द लैम्डा नॉट एम. ठीक है. सो यू दे कैन आइदर यूज कोलरॉस लॉ फॉर लैम्डा नॉट एम, और लैम्डा एम सी के लिए they will use the formula for the conductivity. ठीक है. तो इसको लिख लीजिए जस्ट दिस. ठीक है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इतना ही, कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे. ठीक है, दैट्स इट. अगर आपको देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंट टर्म्स आर मीनिंग, सो यू कैन राइट इट हियर. लैम्डा एम सी, इट इज नथिंग बट इट इज द मोलर कंडक्टेंस, जो प्योर मोलर कंडक्टेंस होता है, इनफिनिट डाइल्यूशन वाला नहीं, मोलर कंडक्टेंस at a particular concentration, at a particular concentration. ठीक है. Then what is lambda naught m? ये आप को भी जानते हैं. This is molar conductance at infinite dilution. The kappa that I have written here, that is conductivity. And m is the molarity. ठीक है. मार्कर अब क्लास में नहीं है क्या? कब आए हैं आप क्लास में? आपने लिखा नहीं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डाइल्यूशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के बारे में कोलरॉस लॉ नहीं लिखा है पार्कर? no sir, that time I got disconnected. अच्छा ठीक है. आप सो देख लीजिएगा, पर ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है. ये हम लेकिन क्या ना, जो यही तो है सेम चीज, वो लिखा नहीं आपने, लेकिन ये सारी चीजें की है ना, Na+NaCl नेगेटिव वाला. yes sir. हाँ वही है, कोलरॉस लॉ वही है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का दे दिया जाए, उससे आपने क्या निकाल लेना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में निकाल लेना. ठीक है. थर्ड यहाँ पे है आपका, थर्ड इज
for determination of dissociation constant of weak electrolyte, ठीक है। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से आपके पास है फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज C alpha square upon 1 minus alpha on 1 minus alpha, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे चीज एक ये है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 से क्या होता है, अल्फा जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली द डिसोसिएशन जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बहुत ही कम होगा, इट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, देयरफॉर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बनता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज जस्ट C into alpha square, C into alpha square, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा, C into alpha square, और जब ये तब होगा व्हेन योर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। और अल्फा आप कहां से निकाल सकते हैं, अल्फा वी नो दैट वी हैव जस्ट सीन दैट इट इज लैम्डा m C डिवाइड बाई लैम्डा नॉट m, ठीक है। बट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इफ अल्फा इज 1 से तो कम ही होगा, इज कंपेरेबल हम कर सकते हैं इक्वलेंट टू 1, यानी आसपास है 1 के, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दैट k विल बी इक्वल टू C इंटू, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इंटू लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा नॉट m स्क्वायर, ठीक है। और जब आपके पास कापा अल्फा इज इक्वल टू 1 तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा